immense pleasure to welcome you all to India Science Festival 2025. Now, in its 6th edition, India Science Festival has become the country's largest non-governmental public engagement and outreach platform for science and technology. Over the last 5 years, ISF has hosted over 475 speakers, 385 events, and 93,000 attendees. And this year, we are back in the city of Pune on the premises of the historic Ferguson College, working towards a bigger festival and a better experience, dedicating the next 2 days to the celebration of science and technology. With this, we begin our inaugural session. May I request our esteemed guest, Mr. Varun Agarwal, founder, Foundation for Advancing Science and Technology, India, Mr. Pramod Rawat, Chairman, Deccan Education Society, Mr. Ram Tilak Ananthan, CTO, Bajaj Auto, to come on the stage and take their seats. I think they're already on the stage to expedite the process. I would now like to take this opportunity to request our chief guest for India Science Festival, Honorable Minister of Higher and Technical Education, to welcome Honorable Minister of Higher and Technical Education, Government of Maharashtra, Shri Chandrakant Dada Patilji. He's also there with us on stage today. I would now request Varun to felicitate our chief guest. Thank you so much, sir, for taking out the time today morning out of your busy schedule and being with us. Now I request all our esteemed guests on the stage to join us in lighting the lamp and declaring the start of the India Science Festival 2025. Thank you so much, everyone. I would now request our respected chief guest, Honorable Minister, to kindly come to the podium and share a few words about the importance of science and technology for the development of the nation. मैं शुरू में इस एक्सरसाइज के बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ बहुत छोटा 2 मिनट का भाषण पढ़ूंगा। बाद में इस सारे विषय को समझने के बाद मेरे दिमाग में जो कल्पना है, जो मैंने वरुण जी के साथ शेयर की है, उसको हिंदी में कहूँगा ताकि मुझे बहुत आसानी से उसको मैं व्यक्त कर पाऊँगा। Good morning, everyone. It is an honor to be here at the India Science Festival, a platform that brings together scientists, innovators, students, and industry leaders to celebrate and advance science and technology. Science and technology are the backbone of a nation's growth. They drive innovation, create jobs, and solve real-world problems. For India to become a global leader, we must invest in research, innovation, and education. Organizations like FAST and events like ISF play a vital role in building this ecosystem. They connect science to society, foster collaborations, and inspire young minds to pursue innovation and discovery. The India Science Festival is a movement to make science accessible and relevant to everyone. By engaging students and promoting innovations, it is shaping India's future as a hub for science and technology. I appreciate the efforts of FAST and the ISF team for their vision and dedication. Together, let us work to make India a leader in science, technology, and innovation. Thank you and my best wishes to the festival. मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाने के कारण वरुण जी के साथ मेरी भेंट हुई और मैं तो पहली बार इस फेस्टिवल में, इस मेले में आ रहा हूँ,
तो मेरा ये स्वभाव है कि किसी भी कार्यक्रम में जाने के पहले उस कार्यक्रम को समझना है, अरे भाई क्या चल रहा है, इतने स्टूडेंट्स और इतने इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने प्रोफेसर्स, इतने साइंटिस्ट क्यों आ रहे हैं, 2 दिन का 3 दिन का समय निकाल रहे हैं। तो मैं थोड़ा पहले आता हूँ, तो वैसे पहले थोड़ा ज़्यादा ही पहले आ गया। तो वरुण जी के साथ थोड़ी लंबी चर्चा हुई, थोड़ा ज़्यादा पहले आया। इसका कारण ठंड हो या बारिश हो, 5 बजे कार्यक्रम है तो मैं 5 को 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ। और संयोजकों के ध्यान में नहीं आया कि पूना में ज़रा अच्छी ठंड है, तो ये 9, 9:15, 9:30 ये बच्चे जो है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो 11 होना चाहिए था। तो मेरा यही मानना है, मैं तो तुरंत जाऊंगा, मुझे नेक्स्ट कार्यक्रम है कि 11 बजे यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 11 इज़ अ वेरी प्रॉपर टाइम, इट्स ओके। लेकिन वरुण जी और उनकी टीम के साथ चर्चा हुई कि क्या एक्सरसाइज चल रहा है, तो उसमें मुझे ध्यान में आया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना, इंटरेस्ट थेरोटिकल न होते हुए उन स्टूडेंट्स ने उस दिशा में आगे मार्गक्रमण करना, पहल करना अपनी नॉर्मल स्टडी के साथ साथ, और उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा संशोधन वो करे, शोध वो लगाए कि जो उनके करियर के लिए भी बहुत ही उनका करियर बड़ा होने के लिए उपयोगी रहेगा, और उनके संशोधन के कारण दुनिया को राहत मिली। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि 2 अलग शब्द है, एक है इनोवेशन और एक है संशोधन। सिमिलर है, लेकिन इनोवेशन में जो ऑलरेडी दिख रहा है उसमें आगे कुछ करना है। जैसे कल मैं प्लास्टो नाम के एक एग्जीबिशन में गया, जिनको इंटरेस्ट है उन्होंने जाना चाहिए, मोशी में लगा है, 238 स्टॉल है, और प्लास्टिक से क्या क्या कर सकते हैं, और विशेष रूप से यूज़ किए हुए प्लास्टिक से क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ बड़ी 238 स्टॉल में अलग अलग प्रोडक्ट है। जैसे एक प्रोडक्ट मैंने देखा बहुत ही अच्छा, गार्डन में बैठने के लिए यूज़ करते हैं, वो बेंच, वो नॉर्मली लकड़े का होता है, एमएस का यानी स्टील का होता है। ये इन्होंने जो प्लास्टिक यूज़ किया है ऐसे वेस्ट पॉलिटिक्स से बनाया, कॉस्ट भी 5,000 में बता रहे हैं। तो स्टर्डी है, गुड लुकिंग है, बारिश में या धूप में उस पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट शायद 500-1000 ही होगी, और 5,000 में बेचेंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई, रोजगार भी बढ़ गया, प्लास्टिक को ख़त्म कर दिया क्योंकि वो दिक्कत हुई है कि प्लास्टिक का क्या करना है। और सबसे महत्व की बात, एक नई चीज़ उन्होंने लाई, यह संशोधन में आती है कि नहीं, तो आई थिंक नहीं आती है कि वो प्लास्टिक, शोध उन्होंने क्या लगाया, यूज प्लास्टिक से बेंच कैसे बनाना। फिर एक उन्होंने थैला मुझे दिया कि जो पानी में डालने के बाद पिघल जाता है, प्लास्टिक थैला है, स्टर्डी है, मार्केट में जाएंगे गेहूँ लाएंगे, चावल लाएंगे, और बाद में यूज़ होने के बाद ऐसे रास्ते पर फेंकते हैं, वो मिट्टी में वैनिश नहीं होता है। तो इतना अच्छा मटेरियल उस प्लास्टिक का है, वो पानी में डाले तो 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में पिघल जाता है। अगेन आई थिंक इट इज़ नॉट संशोधन, ये इनोवेशन हो सकता है कि चल रहे इस विषय में एक स्टेप आगे गए। संशोधन किसको कहेंगे, तो कोविड में वैक्सीन ढूंढा, दिस इज संशोधन, कि ये वैक्सीन यदि न मिलता तो दुनिया की आधी से भी ज़्यादा आबादी शायद ख़त्म होती। इस वैक्सीन ने उस समय तो बचाया, और बाद में न हो, साल में 1 बार लिए या साल में शायद 2 बार लिए, जो भी कुछ उनकी फ्रीक्वेंसी तय हुई हो, उससे कोविड नहीं होगा। तो पूरी दुनिया जो 1, 2, 5, 10, 50, 100 संशोधक लैब में लगातार काम करते रहे, और उन काम करने के बाद उन्होंने वैक्सीन ढूंढा। अब एक नया वैक्सीन आ रहा है, वो महिलाओं के लिए एक दूसरे से गॉड है, देव है। क्या वैक्सीन है, तो नॉर्मली महिलाओं को ब्रेस्ट का और यूट्रस का कैंसर होता है, उससे ज़्यादा उनको कैंसर नहीं होता, तो उसके कारण भी आपको मालूम है। तो उस कैंसर हो ही न, नहीं होना चाहिए, इसकी प्रिकॉशनरी वैक्सीन ढूंढी गई, दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, दुनिया ने उसको यूज़ करना शुरू किया। 9वीं 10वीं के
यानी 12-13 साल के लड़की को जैसे पोलियो डोज देते ऐसे अभी इसको देना ही है। थोड़ा प्रचार होना पड़ेगा क्योंकि अभिभावक पेरेंट घबरा न जाए कि क्या दे रहे हैं उनको, तो उसको प्रबोधन करना पड़ेगा। तो जिसको ये वैक्सीन 12वें-13वें साल में दिया जाएगा उसको ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर नहीं होगा। तो जिसने ढूंढा उसको बड़ी रॉयल्टी मिल गई, पूरी जिंदगी उसकी पैसे से भर गई। महिलाओं के लिए एक वरदान हुआ, दिस इज कॉल्ड संशोधन। तो मुझे लगता है कि प्रयत्न ये चल रहा है वरुण जी का कि देश भर में इस एज में संशोधन की वृत्ति बढ़ाना। अभी मैं आ रहा था, मेरा एक स्वभाव है, आते आते एक इंस्ट्रूमेंट पर देख कर आया कि ये क्या क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एआई बेस है, ये इंस्ट्रूमेंट को कैमरा है, वो कलर का बाइफर्केशन करता है। मैंने कहा कि कुछ काम तो लोगों को करने के लिए छोड़ो ना भाई। यदि एआई सारा करेगा तो हम सब लोगों को तो हर रोज़ नींद निकालनी पड़ेगी, नींद दिन भर आती नहीं तो और भी कुछ करना पड़ेगा। ये मजाक की छोड़ो, तो एआई आवश्यक है, उसके जो दुष्परिणाम है, उसके जो नेगेटिव पार्ट है उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसकी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो आते आते कुछ बच्चों को मिला, पहले इन लड़कियों को मिला, कहाँ से हो, ये इंग्लिश समझ में आने वाले क्या। तो हमारी दीदी ने कहा कि नहीं हमारा सेमी इंग्लिश है। तो मैंने कहा कि कौन से सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाती हो। तो उन्होंने कहा कि साइंस और मैथमेटिक्स। मैंने कहा इंग्लिश में पढ़ाती हो क्या। तो उनको समझ में नहीं आया, वो दीदी बहुत इनोसेंट है। तो मैंने मजाक किया, तो भाई एक बाजू में 4-5 स्टूडेंट्स और खड़े थे और लोनावाड़ा से आए हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो। तो बोले लोनावाड़ा में एक स्पेस इंस्टीट्यूट डेवलप हो रही है चावला जी के नाम से, इसमें पूरे देश भर से विद्यार्थी आएंगे, सुबह नॉर्मल स्टडी करेंगे, स्कूल में जाएंगे पढ़ेंगे, और हर रोज़ 5 घंटे लैब में काम है। मैंने उनको बुलाया, इधर इधर मुझे वो प्रयोगशाला में जब संशोधन यशस्वी होता है तो कपड़े वपड़े शरीर पे है देखना देखते हुए चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, यूरेका यूरेका। तो वैसे मैंने वरुण जी को पुकारा, जल्दी आओ मुझे मिल गए। और मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया कि वरुण जी साल भर में, ये तो साल में एक बार मेला हुआ जिसमें इच्छा निर्माण हुई, आगे क्या, आगे उनको सारी सुविधा कौन उपलब्ध करके देंगे। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को छांटना पड़ेगा, यानी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उनको साल भर में इसकी अवेलेबिलिटी उपलब्धता देनी पड़ेगी। तो कुछ नए संशोधन निर्माण होंगे जिसका दुनिया को लाभ होगा। भारत श्रीमंत था, व्यापार के कारण था, संशोधन भी करते थे, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि पुष्पक विमान था। तो अभी विमान क्या, हमारे पास पहले से था, ये दंतकथा नहीं था। या तब महाभारत के भूमि पर क्या चल रहा है वो बताते थे, यानी वो शायद वायरलेस कैमरा होगा ना, जो वायरलेस कैमरे से स्क्रीन पर देखकर बताता होगा ना। तो तब से है हमारे यहाँ, लेकिन बीच में पूरा उद्ध्वस्त किया गया। तो अभी क्या हुआ, तो पूरी दुनिया संशोधन करती है, उसका पेटेंट प्राप्त करती है, और किसी देश को चाहिए तो मांगती है पैसा, जाती है कॉल्ड रॉयल्टी दो। और रॉयल्टी पर अमीर होते चले व्यक्ति भी और देश भी। अब भारत को यदि अमीर बनना है तो खेती बढ़ानी पड़ेगी, ओके, व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, ओके। व्यापार यानी क्या, किसी ने बनाई हुई चीज़ को बेचना, इससे पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसे प्राप्त करने पड़ेंगे तो ही अमीर हो जाएंगे इनोवेशन से। हमने एक चीज़ ढूंढी, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसका हमने पेटेंट प्राप्त किया, किसी को बनाना है तो हमको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो देश यदि 2047 को आज़ादी को 100 साल पूरे हो रहे हैं, तब तक पूरे दुनिया में क्रमांक 1 पर लेकर जाना है, यानी अमीर बनाना है। और था पहले भारत जहाँ सोने का धुआं निकलता था और आक्रामकों ने लूटा, तो फिर से सोने का धुआं निकलना है। तो इस एक्सरसाइज को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए तो मैंने सुबह के समय में मुझे और शिरडी तक जाना है, दर्शन के लिए तो जाना है, लेकिन वहाँ हमारा बीजेपी का बड़ा अधिवेशन है, हमारे सारे केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है। फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे थोड़ा डीप में जाने था कि ये क्या कर रहे हो, इससे क्या निकलने वाला है, इसका फॉलोअप कैसे करेंगे। इसलिए वरुण जी की और सारे टीम को मैं यह आग्रह से कहता हूँ, इसमें सरकार भी मदद करेगी। आप तो अभी
बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से CSR लेते हो, वो भी मिलता है, मिलेगा और मिलेगा। लेकिन सरकार भी इसमें मदद करेगी। जैसे नॉर्मल स्कूल में आधा समय आपको संशोधन करना है तो परमिशन देनी पड़ेगी ना हम लोगों ने, तो हम देंगे। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे मैंने उनको एक कंसेप्ट बताई जो 2.5 साल पहले मुझे जब शिक्षा मंत्री बनाया गया तब मैंने रखी, व्यवहार में नहीं ला पाई, अब मुझे 5 साल के लिए मिला, तो 5 साल में उस कल्पना को व्यवहार में लाऊंगा। एक पुणे में कैंपस डेवलप करेंगे जिसमें 5 साल का बच्चा भी माँ को कहेगा कि मुझे कुछ सूझ रहा है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो वो जो दिमाग में चल रहा है उसको कोई गाइडलाइन देना चाहिए ना, और एक स्पॉट चाहिए कि जहाँ मशीन्स होगी और वो मशीन पर प्रयोग करते बैठेगा और एक दिन कहेगा यूरेका यूरेका यूरेका। और 82 साल का भी व्यक्ति जिंदगी में बहुत सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, अचानक उसको लगता है कि मुझे कुछ संशोधन करना चाहिए। सबको जहाँ परमिशन है, दिन भर काम करने की परमिशन है, और शायद नो मनी, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, ऐसा एक कैंपस खड़ा करने की कंसेप्ट मैंने रखी थी। वरुण जी के साथ हम इस पर काम कर सकते हैं। पुणे में अभी भी मुंबई जैसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि जगह आज भी मिलती है। तो एक अच्छा कैंपस डेवलप करेंगे जिसमें पैसा देगी सरकार, कल्पना लगानी पड़ेगी आपको कि इसमें क्या क्या करना है, कौन सी मशीन चलानी है, क्या इसका सिलेबस होगा, इसमें लेक्चर्स कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा। तो ऐसा एक पुणे में कैंपस खड़ा करना जिसमें जिनको संशोधन करना है, ढूंढना है कि भाई ये आवाज़ ऐसी इतनी दूर तक कैसी जाती है, दिस इज कॉल्ड संशोधन। हाँ, अभी ये बंद किया तो आवाज़ नहीं जाती, और शुरू करने से कैसे जाती है, उस पर काम करना। तो इससे ही संशोधन से और आगे की स्टेप्स आई ना। अभी मेरे पास है गाड़ी में, मैं नहीं लाया अभी, तो उसमें से आया है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं, इसका एक छोटा जो स्पीकर है वो साथ में रहेगा और मेरे पास माइक रहेगा, वो जो इवेंट में यूज़ करते हैं। तो किसी ने इसके आगे ढूंढा तो वो निकल गया। टीवी, पहले ऐसे एक छोटा टीवी रहता था, अब बड़े साइज़ के भी आ गए, और एक टीवी पे पूरी दुनिया दिखती है, ये चैनल लगाओ, वो चैनल लगाओ, वो चैनल लगाओ। तो ऐसे अलग अलग एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे से नए शोध लगते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी होती है और पूरे दुनिया को राहत हम देते हैं। जैसे अभी वो कैंसर वाले वैक्सीन को जिसने ढूंढा, उसके तो फोटो ही महिलाएं घर में लगानी चाहिए। अरे भाई, इसने ये ढूंढा तो आने वाले दिनों को महिलाओं को ब्रेस्ट और यूट्रस के कैंसर नहीं होंगे। फिर से एक बार सबको ये जो मेला चल रहा है उसके लिए शुभकामनाएं देते हुए मुझे थोड़ी आगे जाने की जल्दी, इसलिए आभार यानी थैंक्स की भी राह न देखते हुए मैं मेरे गाड़ी की ओर दौड़ता हूँ। मेरे साथ 25 लोगों का स्टाफ रहता है, वो मुझे लेकर जाएगा। कोई स्टेज पर मुझे छोड़ने के लिए न उतरे ताकि कार्यक्रम आगे चालू रहे, नहीं तो सारे मुझे छोड़ने के लिए जाते हैं तो कार्यक्रम डिस्टर्ब होता है। वरुण जी यहाँ से हिलो मत, मुझे है सिक्योरिटी, वो लेकर जाएंगे मुझे। Going ahead, I would now like to invite Mr. Sheel Kapoor, Chief Executive Officer, Foundation for Advancing Science and Technology, to take the inaugural session ahead. Thank you, Sanchita. Good morning, everyone. Esteemed guests, speakers, fellow science enthusiasts, students, and friends. It's my absolute pleasure and privilege to welcome you to all to this India Science Festival 2025. I'm thrilled to stand before this incredible gathering of bright minds and curious hearts. We are here to celebrate something truly remarkable: the boundaryless power of science and technology to shape our world and inspire future generations. Allow me to begin by giving you a brief insight into the organization behind this festival. The Foundation for Advancing Science and Technology, or FAST India, was established with a bold and ambitious mission to help transform India into a global leader in science and technology. We believe that science is not just for laboratories and researchers, it is a way of thinking, a way of life, and a critical pillar
for any nation aspiring to lead in the 21st century. Fast India is the only non-profit organization in India attempting this. Our initiatives are guided by our founders, Mr. Ashish Dhawan, founder of the Convergence Foundation, and Varun Agarwal, founder of Aspiring Minds and the Change Engine. We are also fortunate to have an illustrious board of advisors with Professor Tarun Khanna from Harvard Business School as the chairperson, Professor K. Vijay Raghavan, former principal scientific advisor to the Government of India, and Dr. Soumya Swaminathan, former chief scientist at WHO, among other renowned figures. We aim to help harness India's untapped potential in science and technology by engaging extensively with the four key stakeholders in the Indian science and technology ecosystem: academia, industry, policymakers, and the civil society. Fast India's strategy revolves around three core pillars: conducting insightful research to inform policy, building salience through compelling narratives, and implementing targeted programmatic interventions. Now let's talk about the India Science Festival, or ISF as many of us fondly call it. Launched in 2020, ISF has now become the largest non-governmental celebration of science and technology in the country. Over the years, it has served as a vibrant platform to bring together scientists, educators, students, entrepreneurs, artists, and science communicators. Each edition of ISF has had its own flavor. In 2020 and 2024, we gathered in Pune, while in 2023, we brought the magic of science to Hyderabad. Despite the challenges posed by the pandemic, we continued our mission through virtual festivals in 2021 and 2022. And here we are again back in Pune, with our largest and most exciting edition yet, hosted by the prestigious Ferguson College. This year's festival promises an incredible line of events and activities. Over the next 2 days, we will witness popular science talks, panel discussions, policy roundtables, hands-on STEM workshops, art installations, and even live performances. The schemes this year range from clean energy and sustainability to artificial intelligence, biotechnology, and science communication, all areas that are critical for our future. We are particularly excited about some unique events this year. Performances like Vivarta, Transformations, which blends science with art and storytelling, and a live band performance on the periodic table by Band Groove, are set to inspire in new and creative ways. I would also like to draw your attention to our flagship segment, which would be the closing session for the festival tomorrow, the Best of Unbounded Science India, or Bounce India. This session will showcase the best from our three hallmark competitions: Talk Your Thesis, Science in Focus, Spin Your Science. It's a celebration of science in the most engaging and entertaining form. Our vision for ISF is to make science accessible, exciting, and relevant to all. We want to inspire young minds, spark new ideas, and create a public narrative where science is seen not just as a career path, but an integral part of our culture. We also aim to break silos and bring together stakeholders from various walks of life. Whether you are a student exploring career options, a researcher working on groundbreaking ideas, a policymaker shaping the future of innovation, or a science enthusiast simply here for the love of discovery, ISF is your platform. So let's embark on this exciting journey of exploration and discovery together. Welcome to India Science Festival 2025. I would now request the honorable people on the dais, leaders on the dais, to make few comments about ISF. Well, good morning, everybody. I see a lot of school children here. I think that's excellent, and it also poses an enormous challenge for our speakers and others on the stage to communicate well. So all the best. I look forward very much for the events today and tomorrow. Thank you. Great. No, thank you, Vijay. Hi, everyone. It's good to see so many people turn up right in the morning, and we have 2 days full of festivities. As we were saying, this is the 6th edition of the India Science Festival, and the first edition of India Science Festival, which happened in 2020, also happened in Pune. So it's a pleasure for us to be back every time in this city
and talk about new concepts in science and technology, not only from India, but across the world. I'll also like to thank our partners. They're partners from last year who's still continuing with us, Bajaj, who's been very, very helpful in getting ISF off the ground, Kirloskar. We've added new partners as well. The Pune Public Policy Festival, where we did some programs yesterday together, and they've been very supportive for us in the city of Pune. We're also working closely with the Lakshmi Mittal Institute at Harvard University, and they have been very helpful in getting some speakers from Harvard to the India Science Festival. So we have a very exciting program on the next 2 days, and I thought I'll give you a little bit of an idea of what will unfold over the next 2 days here. And we have 75 plus speakers, not only from India, but from across the world at the India Science Festival. We have speakers from USA, Australia, Turkey, Switzerland, so on and so forth. And they'll be talking about whole array of different topics, anywhere from artificial intelligence, quantum physics, material science. We have a lot going on and talking about green energy this time and the energy transition. We have people both from the USA and India to talk about these topics. And it's a very eclectic mix of people who will be speaking over the 2 days, which include scientists, entrepreneurs, historians, artists, and so on. There are 30 plus booths at the festival. We have a special booth from CERN, where they'll be having a simulation game which shows how the particle accelerator works, but kids would actually be able to experiment with it in a form of a game, right? So please go around and look at the booths. We have another very interesting booth where you can study ants, the behavior of ants, right? And how do ants exhibit different behavior, how you can change their motivation, and so on. There are booths from Bajaj, Kirloskar, Aether, which would give you another interesting peek in the manufacturing strength which the country is building, and where we're making a lot of progress in recent times. We're also going to touch a lot on health. We have people from Gates Foundation who have come here, and on life sciences. So a very multidisciplinary program, I would say, which kind of touches both technology, science, pure science, and other things. And there are also workshops. So I'm seeing a lot of students who are sitting here. Please do register for the workshops. You'll be able to get a very, very immersive, hands-on experience with science in these workshops. And then there are games. So there's Science Jam. I'm sure some of you have heard about the just a minute competition, right? Where you're given a topic and you have to talk about it for a minute. How about you're given a science or a technology topic? And this has been a hit at ISF every year. So please go and participate in the Science Jam, which is going to happen. There's also an escape room game, which is built on science. So as you would see, what we are trying to do here is to raise the curiosity of everyone. We have made a lot of cultural elements join into science through games, through quizzes. There's a very interesting quiz which is going to happen, and I'm sure all of you have this schedule. If you don't have this schedule, please pick it up from the registration desk, because there are 4 parallel sessions going on at any time, and you can pick and choose where you want to go. You can go and see a dance. There's a Kathak dance which is happening today where Shia Srinivasan from Harvard will talk about climate change through a dance, right? And then there's going to be a song with a band which will talk about artificial intelligence and periodic table. So a lot of different things are going to happen. Couple of more events I would like to highlight is that we're going to have a debate today. So one of the open problems in science is sentience or consciousness. What is sentience? What is consciousness? We all have this feeling that we exist, but why do we have this feeling? And we all have this subjective experience. So we have 2 scientists who will debate on this topic. One scientist would say that every cell is sentient, and the other scientist would refute this argument, right? So it's going to be a very interesting debate, which I would lean on you guys to go and hear. And the idea is to put forth the fact that debating is a very important part of developing science. Science has developed through debates and evidence over time.
So I'm hoping this will inspire you guys also to debate about some of the open problems in science today and how the future would look. Uh, India Science Festival is a festival where we try to engage people in science in variety of ways, but it is also a platform to move the conversation about science ahead in India, right? As to what more we can do to develop the ecosystem. In this regard, we are doing two report launches here at ISF. One of them you'll just hear in the next 10 minutes, 10, 15 minutes. We have done a science perception survey, the first of its kind in India, as to what do the youth of the country think about science, what is their level of science literacy, what is their enthusiasm about science. And Avinash from our team will present the findings of this survey. We are doing another launch of a case study on the IIT Madras Research Park, which will happen tomorrow. So what we have seen is that some of the research parks in this country have become a great vehicle for translation of science. You know, I'm sure a lot of you would have heard about Agnikul, you know, which did this rocket launch earlier this year with a 3D printed engine, if I'm not wrong. And that is an example of an innovation which came out of the IIT Madras Industry Research Park. So how can we have more such industry research parks in the country? Fastest studies the best practices, and we'll be launching that report tomorrow. And the festival is also seeing multiple policy roundtables happening both in Pune and Delhi over the next week. With this, I'd like to welcome all of you again to the India Science Festival. But please do go around, visit the booths, go to the workshops, listen to the debates, listen to the songs, dances, and I'm sure this will inspire you guys to also not only be someone who's consuming and listening to all of this, but also being a part of India Science Fest next year. We do an open call for proposals. So if you guys have an innovative idea of presenting science to everyone, we'll welcome you to apply. And maybe next time you'll not be there, but you'll be here presenting something to everyone. So with this, I'd like to pass it to other panelists. Good morning, everybody, dignitaries on the dais and the audience. Commendable work, and first time I'm coming here. Bajaj Auto has partnered with FAST for 3 years as part of its commitment to CSR. And I'm amazed to see the work that they're doing to boost the students' engagement in science through different avenues, quizzes, he talked of debates. So I'm pretty amazed as to the width of activities that they've planned for everybody so that people get more curious. One has to become curious about how the world really works, and only this curiosity sparks learning. And such forums help people go through, like you said, the CERN reactors here. You can have a game and then learn about particle physics. So it's amazing what they've put together. Such opportunities are difficult to come by. Ask all students to actively participate in these activities and become more curious about how the world really works. So Bajaj Auto has partnered with FAST for 3 years, and our CSR initiatives are basically to address skill gaps in STEM so that students in schools and in engineering colleges can get more curious about science and technology and have access to better science and technology education. One of the flagship programs that we run, and that I'd like to speak about a little bit, is the Bajaj Engineering Skills Training Program, which we have recently started. This is a program where students, after they finish colleges, are helped to become industry ready. So we have partnered with, we've got 4 of these campuses up and running, and we hope to get 15 more running. So last year we started one such program with the Symbiosis Institute of Technology, an investment of 20 crores. So there are close to 170 equipment that have been put there, including some of this you can see there in our stalls here, robots, automation equipment. So students who have finished diploma engineering or engineering get, this is a finishing program for them where they can, it's 70% practical and 30% theory. They get to go through this course, and after which they get an industry certificate.
And the interesting part and the more, almost all of them, 100% of them have been placed after last year. Now, over the next 3 years, Bajaj hopes to spend close to 370 crores, where 15 universities across India would be running this BEST program. And this is something that I encourage all students in the diploma and engineering schemes to use it as becoming industry-ready professionals. And today, the curriculum that is there in colleges could be a little bit more theoretical, but going through such a finishing program, you become more industry-ready, and it's a great way to get boost your employment potential. I wish all the students here best. Make best use of the program here, and wishing you all success. Thank you. We're very, very thankful to Ferguson College and the Deccan Society for hosting this festival at this beautiful campus. And the team has been very, very supportive, working very closely with our team, also giving us a lot of ideas about what more we can do, sir. So that's been a very good interaction. And also a lot of your own alumnus are great scientists, right? So they've given us access to them to invite some of them to the festival as well. So love to hear your thoughts about the Science Festival, and thanks so much for being our host for this, and not only a host, but a close partner for running India Science Festival. आपल्या संस्कृतीमध्ये ज्ञान हा शब्द परमेश्वराच्या आणि ईश्वराच्या संबंधात वापरला जातो. म्हणजे ईश्वर काय आहे तर ईश्वर ज्ञान स्वरूप आहे. आपल्या भोवती आपण जीवनामध्ये जेवढ्या गोष्टी वापरतो, पाहतो, अनुभवतो, आज नाही पुरातन कालापासून त्याच्यामध्ये विज्ञानाचा खूप मोठा सहभाग राहिलेला आहे. अलीकडच्या काळात खास करून 2 महायुद्ध जी झाली, त्या महायुद्धांच्या कालावधीमध्ये विज्ञानाने अधिक मोठ्या प्रमाणावरती घोडदौड केली. आणि आपण आता 21व्या शतकात हे पाहतोय की तुमच्या घरात जर कोणी आजी असेल जिचं वय 90च्या घरात आहे, तर ती ज्या गोष्टी सांगते की आम्ही आमचा स्वयंपाक चुलीवर कसा करत होतो, आम्हाला ट्रॅव्हल करायचं असेल तर एखाद्या ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जायला कशी प्लॅनिंग करायला लागायची, आणि किती काळ आमचा फक्त एखाद्या छोट्या अंतरावरती ट्रॅव्हल करण्यासाठी जायचा. त्या काळामध्ये छोटेशी आजार जर आले, प्लेगसारखे आजार आले, तर गावाच्या गावं कशी ओस पडायची. आपल्याकडे अन्नधान्याची प्रचंड प्रमाणावर शॉर्टेज निर्माण झालेली होती. आपलं उत्पादन फार कमी होतं, दूध असेल, अन्नधान्य असेल. हे सगळं जे आज बदललेल्या स्वरूपात तुम्हाला दिसतंय, मोबिलिटी असेल, प्रत्येकाच्या घरात स्कूटर दिसते, सायकल दिसते, वाहन दिसते, बाहेर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट दिसतं, मेट्रो दिसतात, विमानं आहेत. ह्या सगळ्यांनी तुमच्यासमोर असं एक जग निर्माण करून दाखवलं की ज्या माणसाने ते एक 50-60 वर्षापूर्वीचं जग बघितलेलं आहे, त्याला फक्त तो फरक कळू शकतो. त्याच्या नजरेतनं फक्त आपण बघायला पाहिजे की आजच्या समाजाच्या जीवनामध्ये विज्ञानाचा रोल किती प्रचंड मोठा आहे. त्यांनी आपलं जीवन किती सुसह्य केलं आहे, सुलभ केलेलं आहे. आणि त्यामुळं आपण खास करून भारतामध्ये फक्त उपभोक्ता न राहता, म्हणजे आज जगामध्ये जे लोक रिसर्चमध्ये काम करतात ते त्याच्यावरती प्रचंड वेळ, मेहनत, पैसा खर्च करतात आणि त्या गोष्टींची निर्मिती करतात, आणि जगाच्या दुसऱ्या भागातले सगळे लोक त्याचा उपभोक्ता म्हणून फक्त वापर करतात. तर आजही आपण 140 कोटीचा देश हा आजही आपला मेजॉरिटीने आज उपभोक्ता म्हणून आहे. तर त्याचं ते स्वरूप बदलून आपण निर्माते बनलो पाहिजे, इनोव्हेशन करणारे लोक असलो पाहिजे. तसं झालं तर आपल्याकडच्या 140 कोटी लोकांपर्यंत एक प्रॉस्पेरिटी आणि जीवनातला स्तर सर्वांना समान दर्जा मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वांना त्या गोष्टी उपलब्ध होतील असं करायचं असेल तर आपल्याला आपल्या देशामध्ये सर्व स्तरावरती उत्कृष्ट दर्जाचं संशोधन करण्याशिवाय पर्याय नाही.
आणि चंद्रकांत दादांनी खूप छान गोष्ट सांगितली की सरकार त्याचा रोल त्याच्यामध्ये बजवायला तयार आहे. इंडस्ट्री तर ऑलरेडी ते काम करत आहे. जसं आता बजाजच्या सरांनी सांगितलं की त्यांनी ऑलरेडी भारतभरामध्ये अशा अनेक संस्थांना, जसं पुण्यामध्ये सिम्बायोसिसला त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मदत केलेली आहे. तर ह्या प्रकारे सर्व लोकांनी आपण मिळून जर काम करत राहिलो तर मला 100% खात्री आहे की पुढच्या 5-10 वर्षामध्ये भारत हा फक्त उपभोक्ता दुसऱ्यांनी केलेल्या निर्माण केलेल्या गोष्टीचा असणारा नाही, तर जगाला अशा गोष्टी पुरवणारा पण देश बनू शकेल. अशा प्रदर्शनांच्यामुळं त्या उद्दिष्टाच्या जवळ जाणं आपल्याला निश्चितपणे शक्य होईल. एवढं बोलून मी शुभेच्छा देऊन आपले 2 शब्द संपवतो. Thank you so much, sirs, for taking the time out this morning out of your busy schedule and being with us. I would now request Mr. Sheel Kapoor, CEO, Foundation for Advancing Science and Technology, to felicitate the dignitaries with a token of our appreciation. I would like to call Professor Vijay Raghavan. Mr. Pramod Rawat, Chairman, Deccan Education Society. Mr. Ram Tilak Ananthan, CTO, Bajaj Auto. And our very own Varun, founder, Foundation for Advancing Science and Technology. Thank you so much, everyone.